Good morning, students. Once again, welcome back in social science subject live class for standard 8. Okay. So today we are going to do the revision in our subject geography. Okay. Chapter number 2. Got it, students? Okay. So the second chapter is land, soil, water, natural vegetation, and wildlife resources. Okay. So, what is the topic given? What is the topic of the chapter? Land, soil, water, okay, then natural vegetation and wildlife resources. Okay. So, with comparison to rest of the chapters which are there in our syllabus, okay, the content given in this chapter is quite long. इस चैप्टर में जो कंटेंट है वो काफी ज्यादा है, काफी लॉन्ग है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर एंड द फर्स्ट टॉपिक ओके दैट वी हैव okay is related to what? Land. So the first topic that we are going to discuss is about land. Now land means what? The topography available on the earth. जमीन है ना, अर्थ के ऊपर जो जमीन है, that is what? Land. यशवी, सृष्टि, आर्या, सौम्या 3 हो गए, प्रतिभा 5, सानिका देवतले 6, शुभम डाली 7, ओजस्वी 8. बेटा where are the remaining students? Okay, and rest of the students are just logging in and then they are moving out. Don't do all these things, okay? सारे के सारे लॉगिन रहेंगे. चलिए, so land is among the most important natural resource. Okay, why? Because all the activities that are being done by the human being are only possible on land. Okay, so most of the activities most of the activities done by human is on land. Okay, most of the activities, I am again repeating, most of the activities done by human is on land. ठीक है, इंसान
जितनी भी एक्टिविटीज करता है उनमें से मैक्सिमम एक्टिविटीज यानी इंसान के सारे कार्यकलाप जो भी काम वो कर रहा है वो सब किसके ऊपर होते हैं? लैंड के ऊपर होते हैं। ठीक है। नाउ वी हैव heard number of times that some part of the world are having more population and some other part of the world are having less population. ठीक है। So कई बार हमने अक्सर सुना होगा कि संसार में अलग अलग हिस्सों में पॉपुलेशन कैसी है? डिफरेंट है ना। जैसे इफ वी टॉक अबाउट महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, okay, so what we heard, West Bengal, that these states have very large population, है ना। तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, केरला, इन राज्यों में पॉपुलेशन कैसी है? बहुत ज्यादा है। So these states of our country have large population, got it? Whereas the other states in our country, have less population. ठीक है। तो हमारे कंट्री में जो बाकी की स्टेट्स हैं वहां पर पॉपुलेशन कैसी है बेटा? लेस है ना। तो आखिर क्या रीजन है? why the population is different from one region to another? Okay, so that is all the uneven distribution of population. Okay, so the population in different parts of the world, the population in different parts of the world is uneven. Uneven means एक समान नहीं है। Okay, the population in different parts of the world is uneven due to varied characteristic. Okay, so the population in different parts of the world is uneven due to varied characteristic of land and climate. Okay, so the population in different parts of world is uneven due to varied characteristic of land and climate. What does it mean? कि संसार के अलग अलग हिस्सों में पॉपुलेशन कैसी है? असमान है, एक समान नहीं है ना। अलग अलग पॉपुलेशन है, यानी वर्ल्ड के कुछ हिस्सों में एरिया इज लार्ज, पॉपुलेशन इज लेस, and in other part the area is less but still the population is more. So why there is a difference in population? Okay, so the difference in population size is because of varied characteristic of land and climate. यानी संसार के अलग अलग हिस्सों में क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग होती हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंड डिफरेंट है, इसलिए क्या होगा? पॉपुलेशन भी डिफरेंट होती है। ओके, सो विच एरियाज हैव स्पार्स पॉपुलेशन? ठीक है, कहां पर पॉपुलेशन कम होती है? ओके, सो द रग्ड टोपोग्राफी, okay, now what does it means? The rugged topography means उबड़ खाबड़ जमीन प्लेन नहीं है, ढाल वाली है, उबड़ खाबड़ है। तो कहीं पानी मिलेगा, कहीं पानी फिल हो जाएगा। ठीक है, the rugged topography
then steep slopes of mountain, rugged topography, steep slopes of mountain, okay, steep slopes of mountain, then low lying area, low lying areas, ठीक है, low lying areas, okay, then which conditions, desert and thick forest, and thick forest have sparse population. It has sparse population. Okay, so the rugged topography. Now, rugged topography मतलब ऊबड़ खाबड़ जमीन, steep slopes of mountain, है ना, जो पहाड़ी इलाके हैं जहां पर कैसी है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है. लो लाइंग एरियाज, लो लाइंग एरियाज मतलब जहां पर आसपास के कंपैरिजन में जमीन का लेवल कैसा है, कम है. तो वहां पर क्या होगा, जब बारिश होगी तो बारिश का पानी फिल हो जाएगा, ठीक है. देन डेजर्ट, जो डेजर्ट एरियाज है वहां पर, एंड थिक फॉरेस्ट, घने जंगल. तो दीज एरियाज है स्पार्स पॉपुलेशन. स्पार्स मतलब बहुत कम, sparse means बहुत कम. So which areas have very less population? These areas. Okay, so you could be asked with a question. आपको एग्जाम में इसके बेस पर प्रश्न बन के आ सकता है. Okay, which part of the world may have sparse population? Which part of the world may have sparse population? वर्ल्ड के कौन से पार्ट में पॉपुलेशन कम होती है? So which part of the world? The rugged topography, steep slopes of mountain, low-lying areas, desert, and thick forest. So these areas have sparse population. Okay. Then what is the next thing? The next thing is, okay, plains and river valleys. Okay, so plains and river valleys. Okay, अब यदि इस एरिया में स्पार्स पॉपुलेशन कम है तो फिर पॉपुलेशन कहां पर अच्छी होगी? ओके, इन एरियाज में पॉपुलेशन इज लेस. So in which part of the world the population is good? So which area? Plain and river valleys. Okay, so plain and river valleys offer suitable condition for all the human activities, for all the human activities. ठीक है, तो ज्यादा पॉपुलेशन कहां होगी बेटा? किस एरिया में होगी? प्लेन्स एंड रिवर वैलीज, जो मैदानी इलाके हैं जहां पर रिवर फ्लो हो रही है और रिवर के दोनों तरफ कैसा है? प्लेन एरिया है. So the plain areas and river valleys offer suitable condition for all the human activities. ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए, इंसानी गतिविधियों के लिए सुटेबल कंडीशंस कहां मिलती है? प्लेन्स और रिवर वैलीज में. ओके, thus they have more population.
इसलिए इनमें क्या होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी। ठीक है, सो प्लेन्स एंड रिवर वैलीज ऑफर सुटेबल कंडीशन फॉर ऑल द ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक है, सो जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, इंसान जो भी एक्टिविटीज करता है, उन सारी एक्टिविटीज में, है ना, इंसान को एग्रीकल्चर करना है, फैक्ट्री लगाना है, स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाना है, ठीक, तो फॉर ऑल द एक्टिविटीज, फॉर ऑल द एक्टिविटीज, है ना, इंसान जो भी काम कर रहा है, तो उस काम के लिए सबसे अच्छी सूटेबल कंडीशंस कहां अवेलेबल होती हैं, प्लेन्स एंड रिवर वैलीज। देयरफॉर दे हैव मोर पॉपुलेशन। इसलिए प्लेन एरियाज में और रिवर वैलीज एरियाज में क्या होगी, पॉपुलेशन ज्यादा होगी। ठीक है, दैट इज व्हाट अबाउट लैंड। ओके, सो the population in any particular area can be sparse or can be more, है ना, किसी भी एरिया में पॉपुलेशन कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। सब कुछ किस बात पर डिपेंड करेगा, इट डिपेंड ऑन हाउ द लैंड इज अवेलेबल। ओके, सो प्लेन एरियाज, which areas, plain and river valley, they have more population. ठीक है, now the next thing that we are going to discuss is about the land use. Okay, the topic which is given next in our textbook is land use. Okay, now what does it means? Okay, so the various purposes, the different purposes, again repeating, the different purposes, the different purposes for which, I am again repeating, the different purposes for which, okay, the land is utilized. Okay, so the different purposes for which the land is utilized, okay, is known as, okay, land use। ठीक है, अब डिफरेंट पर्पस मतलब अलग अलग कामों के लिए। डिफरेंट पर्पस का सेंस क्या है, अलग अलग कामों के लिए। ठीक है, डिफरेंट पर्पस का सेंस क्या है बेटा, अलग अलग कामों के लिए, अलग अलग कार्यों के लिए। ठीक है, तो द डिफरेंट पर्पसेस फॉर विच द लैंड इज यूटिलाइज्ड इज नोन एज लैंड यूज। ठीक है, जो डिफरेंट पर्पसेस हैं, है ना, पर्पस मतलब उपयोगिता, तो अलग अलग कार्यों के लिए जब लैंड का यूज होता है तो दैट इज नोन एज व्हाट, लैंड यूज। ओके, नाउ फॉर व्हाट टाइप ऑफ पर्पस और फॉर विच पर्पसेस द लैंड इज यूज्ड, है ना। नॉर्मली इंसान किन कामों के लिए लैंड को यूज कर रहा है। ओके, सो व्हाट आर दीज, फर्स्ट इज फॉर एग्रीकल्चर, जमीन किसके लिए उपयोग हो रही है, एग्रीकल्चर। सो वन ऑफ द पर्पस फॉर यूजिंग लैंड इज एग्रीकल्चर। ओके, सो यूजिंग द लैंड फॉर एग्रीकल्चर इज कॉल्ड लैंड यूज। ओके, then large part on the earth is covered with forest. The large part on the earth is covered with
Okay, so forestry is a second purpose. Then the human being is doing, okay, mining, then building houses. What the human being is doing? Building houses. Okay, then we are building roads. Okay, we are building industries. Okay, etc. Now, why etc.? Because there are n number of purposes for which the human being is using the land. Okay, so everything, whether there is a direct involvement of the human being for the use, or sometimes it is the nature. For example, the forest. The forest basically what? It is a natural grown vegetation, but still land is covered for that. So everything falls under what? Land use. Okay, हर एक चीज किसके लिए? लैंड यूज के लिए होगी. बट आर वी एबल टू सेट अप माइनिंग इन एवरी एरिया? क्या पूरे अर्थ पे माइनिंग कर सकते हैं? नहीं, है ना? क्या पूरी की पूरी अर्थ पर हाउसेस बना सकते हैं? नहीं. क्या अर्थ के हर एक जगह पर रोड कंस्ट्रक्शन होगा? नो. व्हाट डज इट मीन्स? कि the different purposes are there, but it doesn't mean that on every places on the earth, okay, we can do all these activities. ये सारे पर्पसेस हैं लैंड यूज के, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम हर जगह एग्रीकल्चर कर सकते हैं, हम हर जगह फॉरेस्ट्री कर सकते हैं, हम हर जगह माइनिंग कर सकते हैं. ये सारी चीजें सभी जगह पर पॉसिबल नहीं है. ओके, इट मीन्स दैट कि लैंड का यूज, है ना, अर्थ पर जो जमीन अवेलेबल है वो किस काम के लिए उपयोग होगी, तो वो डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करता है मतलब यदि लैंड प्लेन है, जमीन बिल्कुल समतल है, अच्छी मिट्टी है, water available है, then that portion of the earth or that portion of the land could be used for agriculture. तो फिर अर्थ का वह पोर्शन किसके लिए काम आ सकता है? एग्रीकल्चर के लिए काम आ सकता है. Getting the difference of it. So that is what the use of land. तो ऐसा नहीं है कि हर जगह हम लैंड को क्या करेंगे, किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं. ठीक है? सो द यूज ऑफ लैंड, द यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड, ओके, द यूज ऑफ लैंड डिटरमाइंड बाय physical factors. Okay, the use of land is determined by physical factors. What are the physical factors? Such as topography. ठीक है? So use of land is determined by टोपोग्राफी. जमीन कैसी है किससे पता, किसके हिसाब से? टोपोग्राफी के हिसाब से. देन टाइप और क्वालिटी ऑफ सॉइल, देन क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया. ओके, देन अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. Okay, now what does it actually means? So the use of land determined by physical factors. ठीक है? जमीन को किस प्रकार यूज किया जा रहा है वो बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. पहला क्या है? टोपोग्राफी.
जमीन कैसी है? इज इट अ प्लेन लैंड, मार्शी लैंड, रग्ड टोपोग्राफी और माउंटेनियस रीजन? ठीक है। सो ह्यूमन एक्टिविटीज के लिए सबसे सुटेबल, इंसान के लिए कोई भी काम करने के लिए सबसे सुटेबल जमीन कैसी होती है? प्लेन लैंड। जमीन प्लेन है तो ग्राउंड बना लो, टेम्पल कंस्ट्रक्ट कर लो, घर मकान बना लो, है ना। और रग्ड टोपोग्राफी है, उबड़ खाबड़ जमीन है, तो पहले जमीन को क्या करना पड़ता है? प्लेन करना पड़ता है। ओके, so the use of land determined by these many factors. ठीक है। Then apart from these, now these are what? The physical factors. ये क्या है? Physical factors हैं। ठीक है। Then there are human factors also. ये physical factors हैं for which the land use is determined. ठीक है। Then next is what? The human factors. ठीक। So human factors like population and technology also determine the use of land. Also determine the use of land. Okay, so human factors like population and technology also determine the use of land. ठीक है। तो ह्यूमन फैक्टर्स हैं, इंसानी फैक्टर। तो इंसानी फैक्टर्स भी क्या करता है? लैंड यूज को डिटरमाइन करता है, लैंड यूज को शो करता है। ठीक है। सो द ह्यूमन फैक्टर्स है ना, सो जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं वो भी क्या शो करेंगे? लैंड यूज शो करेंगे। ठीक है। सो लैंड यूज यानी जमीन, अर्थ पर जो लैंड अवेलेबल है उसको किस तरीके से उपयोग किया जा रहा है। ठीक है। तो देयर वेर टू फैक्टर्स, दो चीजों पर यूज ऑफ लैंड डिपेंड करेगा। फर्स्ट इज ए फिजिकल फैक्टर एंड सेकंड इज ए ह्यूमन फैक्टर। ओके, द यूज ऑफ लैंड डिपेंड्स ऑन physical factors and human factors. Okay, now what are the physical factors? Topography, soil, climate, minerals and availability of water. So these are what? These are the physical factors. Okay, then human factors. Okay, so what are the human factors? Population and technology. Okay, so these could be asked in examination. Okay, आपको एग्जाम में इनके बेस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। जैसे फिजिकल फैक्टर्स में क्वेश्चन क्या बन सकता है? मेंशन द फिजिकल फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द यूज ऑफ लैंड। तो आपको क्या लिखना पड़ेंगे? फिजिकल फैक्टर्स लिखना। ठीक, फिजिकल फैक्टर्स के बजाय आपको क्वेश्चन क्या पूछ लिया? मेंशन द ह्यूमन फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइंस द यूज ऑफ लैंड। मेंशन द ह्यूमन फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइंस द यूज ऑफ लैंड। प्रश्न क्या होगा? मेंशन द ह्यूमन फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइंस द यूज ऑफ लैंड। ठीक है। तो वो चीज क्या होगी? What are the human factors? Population and technology. ठीक। So these are what the different factors. Okay, different factors on which the land use is determined. ठीक है। चलिए, so we are winding up the today's session here only बेटा, है ना।
because in online it is very difficult again to match up your eye contact, है ना, आंखें भी दुखती हैं, तो कुछ ऐसे रीजंस हैं जिसके कारण कभी कभी क्लास थोड़ी सी लंबी लगाते हैं, कभी थोड़ी शॉर्ट होती है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, ओके, थैंक यू।